Hi everyone. Hope all of you are doing well. My name is Manmohan. Hi everyone. And I'm the General Manager of POCO in India. Well, today I'm super excited to be here, and I'm the General Manager about our next in India product. Today I'm super excited to be here to talk about our next product. So what are we waiting for? Let's get started. A very hut-scale launch. Before we move on to the product, let's get started. Let me take a step back and explain what before we move on to the product. POCO stands for. Let me take a step back and explain. Number one, what technology that truly matters. POCO stands for three pillars. Number two, democratizing decision making truly matters. And lastly, number two, always ever democratizing decision making. Now, what do I mean by this? Here, always technology that matters. We only focus on what do I mean by this? That help technology that matters daily life of our users. We only focus on tech to arrive at this spec that help enhance daily life democratizing decision making. To arrive at this spec, always engaging with our fans and community to figure out what they are always engaging with our fans and community. We keep to figure out center what they are all the things that we do. And all our POCO products, we keep evolving while we stick to our core. All our POCO products making POCO evolving while we stick by the users and for the users. Making POCO a good example of this is by the users we are doing and with POCO M2. A good example of this is what we are doing. Android 11 is coming to all the POCO X2 users. Talking about POCO X11 is coming to all the POCO X2 users. Is the number one best-selling smartphone on Flipkart. The POCO X2 is the number one best-selling smartphone on Flipkart. Let's take a look at the price range of 15,000 and above. POCO X2 not just vis-a-vis. Let's take a look at the comparison similar time frame. POCO, as you can see here, vis-a-vis other publicly available data, similar time POCO X2, as you can see here, much higher ratings publicly available data. All the other products POCO X2 has much higher ratings. We believe in launching one high-quality product. At POCO, multiple believe in launching one high-quality product. Thanks to this belief, we are happy to announce that POCO is now the number one quality smartphone brand. That POCO is now the number one quality smartphone. का झंडा ऊंचा अपने शान से, देश का झंडा हम फहराए शान से। हिंदुस्तानिया इंडिया कहलाए, हिंदुस्तानिया सबसे पहले कहलाए, पहुंचाए सबसे पहले पहुंचाए इंडिया, 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 देखा आपने जो समेटे जाए, देखा आपने जो समेटे जाए, अपना ये देश सबसे तेज है, ना ठहरे अपना ये देश चले ही जाए, ना ठहरे थके चले ही जाए, हमें बनाए से ज्यादा सपने हैं बुलंद, न पीछे जाए। Let us talk about our brand mantra a little bit. Everything you need, nothing you don't. When we think about our future products, we engage with our fans to understand their requirements. Many people come back with curved display, much more to understand which of these features. Let us talk about our brand mantra a little bit and which ones do everything you need. Nothing you this, we are able to crystallize. When we think about our future products that make a difference, we engage with our fans the ones to understand that do not their requirements. Hence, many people come everything you need, nothing you don't. So rest assured that we have all the features that you need. I'm super excited to announce the product POCO M2 Pro. Which of these features? Let us talk about our brand mantra a little bit. Everything you need. Nothing good. We are able to crystallize. Think about our future products that make a difference. Use it after one to understand. Hey, thanks Manmohan. Super excited to be a part and revealing the details of the new device to the POCO community. Now it's a little different from what I usually do.
but it's exciting nonetheless. Now, a lot of you guys will be super happy to know that the new POCO M2 Pro has the Qualcomm Snapdragon 720G chipset. It is one of the most capable chipsets in this price category. Compared to previous generations of chipsets, the 720G has significant improvements, including a single-core performance boost of up to 40%. Now, whether it's gaming or utility, this chipset can handle mostly everything you throw at it. The 720G has interesting setup for the cores as well. You get 2 Cryo 465 cores at 2.3 GHz and 6 Cryo 465 cores at 1.8 GHz, which means that there's a good balance between performance and efficiency. That, coupled with the massive battery that the phone has, makes this an impressive setup. Up until recently, the Cryo architecture was available on devices that were much more expensive. So it's really interesting to see it on the POCO M2 Pro. Now, that was the CPU, but for a lot of gaming people, the GPU is really important. This device has the Qualcomm Adreno 618 GPU. This also has the Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator, which not only improves gaming performance, but also gaming efficiency. So whether you're playing long sessions of Battle Royale or any other type of game, this device should be able to handle that without any problem. Now, the M2 Pro has a 6 GB of LPDDR4X RAM and UFS 2.1 storage, which means that the RAM and storage are not going to be bottlenecks for the 720G, and it's going to thrive and be able to do its thing. Now, I spoke about the battery earlier, and a lot of you guys will be happy to know that there is no skimping out on the battery, and you get a 5000 milliamp hour battery. But what's more interesting to me is that it also supports 33 watt super fast charging. And what's even more interesting to me is that the 33 watt super fast charger comes inside the box of the phone. Finally, in this price bracket, you not only get super fast charging, but also a charger inside the box. Now, the charger is pretty capable and it can charge the device up to 50% in just half an hour. Now, with gaming being one of the most important activities today, I'm sure a lot of you guys are interested to know what gaming is like on the M2 Pro. The Qualcomm Snapdragon 720G chipset includes a lot of special provisions for gamers. It also includes Snapdragon's elite gaming optimizations, which improves the overall gaming experience by enhancing 3 important aspects: visual and audio optimizations, but also a charger inside the box. With gaming now moving the charger is pretty capable and it can charge the device up to 50% in just half an hour to enjoy. Now, with gaming being one of the most important a lot of people are activities today, I'm sure a lot of you guys are interested to know what gaming is like on the M2 Pro. The Qualcomm Snapdragon 720G chipset and that includes a lot one router and multiple devices connected to the router. Now, to compensate for this, the POCO M2 Pro has a 2x2 MIMO Wi-Fi, which basically stands for multiple in, multiple out. So by increasing the number of transmitters and receivers, you get better connection to the router and hence you can say goodbye to high pings. Now, with a combination of the processor and the MIMO Wi-Fi, you get good gaming with low latency, and that makes a good gaming combination. That's not all, however. The POCO M2 Pro also has the Z-Shocker vibration haptics. Now, these are rich and distinctive vibrations that come from the device thanks to the piston-style motor versus a rotation-style motor that you see on typically other devices. What is also interesting is that you can't really understand what this feels like until you use the device. But know this, that 120 distinct patterns of vibration are produced by this motor to give you an overall enhanced vibration experience, whether you're using the device or gaming on it. Now, that's everything from performance and gaming. To tell you a little bit more about the camera on the M2 Pro, it's over to Techno Ruiz. हेलो दोस्तों, मैं हूं रुहेश फ्रॉम टेक्नो रुहेश। पहचाना नहीं? ओके। एनीवेज, मैं यहां पोको M2 Pro के कैमरे को पूरी तरीके से निचोड़ने वाला हूं, मतलब डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कैमरा हमारी लाइफ में आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम बहुत सारे फोटोज वीडियोस निकालते हैं। स्पेशली दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम बहुत सारे कंटेंट्स जो क्रिएट करते हैं। तो यहां पर पोको M2 Pro में मेन सेंसर जो है वो आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, जिससे आप स्टनिंग पिक्चर्स यहां पर निकाल सकते हैं। होल्ड ऑन, एज अ रिव्यूअर आपको तो पता ही है, मुझे डिटेल में बात करना ज्यादा पसंद है। तो लेट्स सी पोको M2 Pro के कैमरे में कितना दम है। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, कैमरे की डिटेल्स काफी बढ़िया है, कलर्स भी आपको एकदम एक्यूरेट मिलते हैं और साथ में जो डायनामिक कॉन्ट्रास्ट है वो भी आपको काफी कमाल के मिलते हैं। एक और एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर सेंसर का पूरा जादू चल रहा है, वो भी लेस देन आइडियल कंडीशन में।
हालांकि आजकल काफी मॉडर्न सेंसर्स हैं जो डे लाइट में तो अच्छे पिक्चर्स ले लेते हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी पोको M2 Pro के जो सेंसर है उसने हमें मायूस नहीं किया है। साथ में पोको M2 Pro में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिसमें आपको 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो काफी एरिया इसमें कवर हुआ है, साथ में डिटेल्स भी काफी बढ़िया है विथ एक्सट्रीमली लेस डिस्टॉर्शन। अब इस क्वाड कैमरा फैमिली में आगे बढ़ते हैं तीसरे मेंबर की तरफ, मैक्रो सेंसर, जो आपको सिर्फ बेहतरीन मैक्रो शॉट्स नहीं बल्कि फुल HD वीडियोस निकालने का भी मौका देता है। आजकल दोस्तों इंडोर फोटोग्राफी तो काफी यूजफुल है। ये वीडियो आप देखिए पोको M2 Pro के मैक्रो सेंसर की फुल HD के अंदर, वो भी 21:9 नेटिव एस्पेक्ट रेशियो में। कैसा लगा? बढ़िया ना? आगे बढ़ते हैं। पोको M2 Pro में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिलता है जिससे आप सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी काफी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हैं। ये फोटो आप देखिए, मैंने अपनी बेटी के साथ लिया, काफी बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट निकल कर आया है। अब पीछे से आगे आते हैं। पोको M2 Pro में आपको 16 मेगापिक्सल की इन स्क्रीन सेल्फी मिलती है जिससे आप काफी अमेजिंग सेल्फीज ले सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, लेट मी इंट्रोड्यूस अ किलर न्यू फीचर जो पहली बार इंडिया में पोको के फोन में आपको मिलने वाला है, वो भी प्योरली विथ कम्युनिटी फीडबैक। द फ्रंट कैमरा नाइट मोड। फ्रंट कैमरा नाइट मोड एक कमाल का न्यू फीचर है जिसके कारण दोस्तों आप नाइट के अंदर ब्राइट सेल्फीज यहां पर ले सकते हैं डिम लाइटनिंग कंडीशन में। अभी आपको रात में रोशनी तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैमरा हार्डवेयर काफी सिमिलर हो रहा था। आज की तारीख में हम ये जान चुके हैं कि कैमरा सिर्फ अच्छे हार्डवेयर से नहीं बनता है बल्कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। पोको M2 Pro में काफी ऐसे फीचर्स है जो कम्युनिटी की रिक्वेस्ट के बेसिस पे ऐड किए गए, जिसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट है प्रो कलर मोड। हालांकि ये फोटो अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छी निकल कर आई है, लेकिन आज भी काफी सारे लोग ऐसे जिनको थोड़े पंची फोटोज भी चाहिए होते हैं, फिर चाहे डीप कलर्स, हायर डायनामिक रेंज और बेटर कॉन्ट्रास्ट क्यों ना हो, प्रो कलर मोड से आप इस तरीके की कमाल पिक्चर्स यहां पर निकाल सकते हैं। बढ़िया, आते ही हम टेस्ट करेंगे। अब बात करते हैं पोको M2 Pro के प्रो वीडियो मोड की। ये क्रिएटर्स का जमाना है दोस्तों, और खुशी होती है जब एक फोन में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जिससे आप प्रो क्वालिटी वीडियोस शूट कर सकते हैं। बहुत बातें कर लिया, अब आप खुद देख लीजिए। पोको M2 Pro में दोस्तों आपको काफी सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। देखते हैं कम्युनिटी क्या खास करती है इन फीचर्स के साथ में। सिर्फ वीडियो ही नहीं, बट एक ऐसा फीचर जो पोको फैंस में काफी डिमांड में था, वो है रॉ मोड, जो इस फोन में भी रिटेन किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि आप अपने एवरीडे पिक्चर क्वालिटी को इंस्टाग्रामेबल बना सकते हैं बिना कंप्यूटर को छुए, रॉ मोड के बदौलत। तो दोस्तों ये था पोको M2 Pro का क्वाड कैमरा। अब डिजाइन की बात करेंगे मेरे दोस्त अरुण फ्रॉम ट्रैकिंग टेक।
वेलकम गाइज, वाओ, इट्स अमेजिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस हटके लॉन्च। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, पोको M2 Pro एक कैमरा और परफॉर्मेंस पावर हाउस है, लेकिन जैसे कहते हैं, गुड थिंग्स कम इन ग्रेट पैकेजेस एंड पोको M2 Pro डेफिनेटली फिट्स द बिल। दोस्तों, इसका जो डिजाइन है, डेफिनेटली इट मेक्स इट स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ये जो टू टोन कलर है, वो दूसरे फोन से डेफिनेटली बहुत ही अलग है। और दोस्तों, इसका जो टू टोन डिजाइन है मुझे याद दिलाता है पोको F1 की, जी हाँ, जिसमें सिग्नेचर कार्बन फाइबर बैक पैनल था। एंड इसका जो एज डिजाइन है, डेफिनेटली इट स्टैंड्स आउट एंड आई लाइक इट एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लाइक इट। दोस्तों, एक चीज मैं इस डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। दिस डिजाइन इज एक्सट्रीमली सिमेट्रिकल। मतलब अगर आपने एक लाइन खींच दी बीच में से, जो दोनों भी पैनल्स है दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम होंगे। वैसे नॉर्मल लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, लेकिन जिनको बॉर्डर लाइन ओसीडी वगैरह है, डेफिनेटली उनको पसंद आएगा। और दोस्तों, इसमें 5000 mAh की बैटरी होने के बावजूद दिस फोन मैनेजेस टू हैव अ वेरी स्लिम प्रोफाइल, ओनली 8.8 mm। और हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आ जाता है। इट मेक्स अ कम बैक इन पोको M2 Pro। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो है बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी यूजफुल। इट इज मोर एर्गोनॉमिक, क्योंकि पावर बटन भी उधर होता है जहां पे आपका थंब रेस्ट करता है। इट जस्ट इंक्रीजेस द ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस। और हाँ, दिस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इज वेरी फास्ट। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले नाउ। इट हैज अ ह्यूज डिस्प्ले ऑफ 6.7 इंच विद सिनेमैटिक 20:9 एस्पेक्ट रेशियो एंड दिस इज एक्सीलेंट। अगर आप बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, यू आर गोइंग टू लाइक इट। और दोस्तों, इसका जो FHD प्लस पैनल है, शार्प है, क्लियर है, और अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर व्यूइंग एंगल्स देखोगे तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और दोस्तों, इसमें 3 कलर्स आते हैं, आउट ऑफ द ब्लू, ग्रीन एंड ग्रीनर एंड माई पर्सनल फेवरेट, जी हाँ, 2 shades of black। तो दोस्तों, that is POCO M2 Pro for you. Now let me hand it back to Manmohan to take you through the bit that I know you have been waiting for. Thank you so much, Arun, for taking us through the beautiful design of POCO M2 Pro. Before we talk about the price, let's talk about another important aspect of any product, quality. POCO M2 Pro comes with a triple Corning Gorilla Glass. That means safety on the front, the back, and even on the camera module. POCO M2 Pro comes with reinforced corners that makes it durable against falls and drops. It also comes with P2I's nano coating that makes it splash and dust resistant. To exemplify this, let's take a look at this video. Let me quickly summarize POCO M2 Pro. POCO M2 Pro is a complete package. Qualcomm Snapdragon 720G, 33-watt fast charger in the box, a large 5000 mAh battery, and a beautiful 48 megapixel quad camera array. Now to talk about price. Let us compare POCO M2 Pro against the products that are available in the market today. In fact, in my opinion, POCO M2 Pro is a much superior choice compared to products that are priced higher. So let us compare POCO M2 Pro against Realme 6 Pro. Both the POCO M2 Pro and Realme 6 Pro come with the same platform, Qualcomm Snapdragon 720G. POCO M2 Pro comes with a larger battery, 5000 mAh battery, compared to only 4300 for the Realme 6 Pro. POCO M2 Pro has a 33-watt fast charger in the box, whereas Realme 6 Pro only has 30-watt fast charger. POCO M2 Pro is only 8.8 mm thick, whereas Realme 6 Pro 9.4. The radiation levels, the SAR levels of POCO M2 Pro are very less compared to Realme 6 Pro. POCO M2 Pro comes with a triple Corning Gorilla Glass for safety. But on the camera department, we do understand POCO M2 Pro comes with a 48 megapixel quad camera array, whereas Realme 6 Pro comes with a 64 megapixel quad camera array. We at POCO believe in the output rather than the megapixel count.
Let us take a look at a quick camera comparison. Here are pictures of the beautiful Vidhan Saudha building in Bangalore shot on both the phones. Here is a side-by-side comparison of the photos shot on POCO M2 Pro and Realme 6 Pro. In this picture here, you can notice how the actual color of the sky has been retained while it looks dull on the sample from Realme 6 Pro. The overall colors as well looks punchier on POCO M2 Pro compared to Realme 6 Pro. Now to put things into perspective, we believe POCO M2 Pro is a much superior package compared to Realme 6 Pro. Now to the million-dollar question, the price. Just FYI, Realme 6 Pro is priced at 17,999 for the 664 variant. Hence, what should be the price of POCO M2 Pro? POCO M2 Pro comes in 3 variants. The first variant is a 4GB RAM, 64GB storage, and it is priced at 13,999. The second variant is a 6GB RAM and a 64GB storage, and it is priced at 14,999. The third variant is a 6GB RAM and a 128GB storage, and it is priced at 16,999. POCO M2 Pro will now go on sale for the very first time at 12 noon, 14 July, only on Flipkart. We would also like to thank all our streaming partners. Hope you all enjoyed the show as much as we did. That's all from us. Thank you and bye-bye.